Question number third. Sia Gupta. The resultant of two vectors A and B are shown in the figure. Is root 7b. Find the value of b by a. So resultant का magnitude given है root 7b. We apply the formula. Theta is given 60 degree और उससे हमें a b by a की वैल्यू निकालनी. R is root a square plus b square plus 2ab times cos theta. Substitute the value of R. This is root 7b. Theta is 60, and then you get some equation. From that equation, we have to find the value of b by a. Try. सर स्क्वायर कर दे सर बोथ साइड्स को. हाँ हाँ ऑब्वियसली स्क्वायर ही करेंगे. स्क्वायर करेंगे फिर हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर में रिलेशन मिलेगा. उस पूरे इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो b by a में क्वाड्रेटिक बन जाएगी. We get quadratic in b by a and solve that quadratic root. I mean, there are many ways to solve, whichever strikes to you and easy for you. Yes. Yes boss. आया किसी का आंसर थर्ड का? Sir, 1/2. 1/2 is the answer, right? Sir, can you solve this question once? Mm-hmm. Sir, can you solve this question once? I can, but you should also try. Cos 60 is half. क्या आ गया ये 6b square minus ab minus a square is equal to 0. Divide by a square. Find the value of b by a. -1 plus minus root b square minus 4ac by 2. Sorry. 24 plus 125. 25 root is 5. 5. One plus minus 5 by 2. No, sorry, 2 into 6, na? 2a. सर 6b square is equal to ab minus a square तक हुआ था सर. हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सर मेरा सर 6b square is equal to ab minus a square तक हुआ था सर. उसके बाद सर आपने क्या किया सर? बेटा इस पूरे को लेफ्ट साइड ले आए फिर पूरी इक्वेशन में हो गया सर मेरा. इसके बाद पूरी इक्वेशन में a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. क्यों? क्योंकि हमें b by a की वैल्यू निकालनी है. सो यू वांट दिस इक्वेशन टू बी ऑफ b by a. ओके सर, गॉट इट सर. So it will become 6 by 12. 6 by 12 is 1 by 2. Question number 4. और हमने किया है शायद. I think so. Did you do question number 4 in class? Question number 4 हमने क्लास में यस किया सर है. किया था. शायद आंसर 10 न्यूटन था. आंसर 10 है. यस ये हमने किया था. Question number 5.
If a plus b plus c is equal to 0, the angle between a and b and c are 150, 120 respectively, then the magnitude of vector a, b and c. इसके लिए क्या किया था हमने? If a plus b plus c, did we do Lami's theorem? Did we do Lami's theorem? Yes, sir. किया था Right. मैंने. So this will be for the Lami's theorem. A plus b plus c is equal to 0 means it will represent the cyclic order of any vector triangle A, B and C. The angle between A and B, so ये बाहर का angle है 150, inside angle become 30. Angle between B and C is 120, so inner side angle becomes 60. So this will be 9. A by sine 60 is equal to B by sine 90 is equal to C by sine 30. So from there we get the ratio of A, B and C. What is the answer for 5? Arnav Sharma, what is the answer for 5? Yes, boss. What is the answer for question number 5? So A by B is equal to A is to B is to C is equal to how much? Sine 60 ratio sine 90 is to sine 30. Sine 60 is root 3 by 2. Root 3 by 2, sine 90 is 1, sine 30 is 1 by 2. Multiply the whole equation by 2, so ratio will become root 3 is to 2 is to 1. It is just by the sine law of a triangle, the ratio of side length to sine of opposite angle, that ratio is constant. Right? Yes. Sir, is question number 4 wrong? Question number 4 wrong क्यों? Answer Because पूछ लो. yes sir, मेरा आंसर 14 रूट 2 n आ रहा है सर. क्या बात कर रहे हो? ये हम कर चुके हैं बेटा क्लास में. थे नहीं आप क्लास में? Same question I took from the DPP only. P vector is f1 plus f2. इसका मतलब P स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? A square plus B square plus 2AB cos theta. Q vector is f1 minus f2. डिफरेंस का जब फॉर्मूला निकालते हैं तो Q square will be A square plus B square minus 2AB cos theta. Minus minus gone. 2 times f1 square plus f2 square. Yes sir. Right? Yes sir. Sir वही सर 3 रूट 2 न्यूटन प्लस 4 रूट 2 न्यूटन सर होगा 7 रूट 2 न्यूटन 7 रूट 2 into 2 सर 14 रूट करना है क्या कर रहे हो यार? तो स्क्वायर करोगे तो ये 9 into 2 18 plus 60 into 2 32 which is 50 multiplied by 2 which is 100. So root of 100 is 10. सर मैं स्क्वायर करना भूल गया सर. क्या आप ये कर रहे थे root a square plus b square is equal to a plus b? No, it is not correct. नहीं सर, सर मैंने ये नहीं किया सर. मैंने सर स्क्वायर जो किया था सर वो मैं भूल गया सर, क्योंकि मैंने f1 f2 के बीच में कंफ्यूज होकर मैं स्क्वायर करना भूल गया, तो मैंने सीधा f1 f2 को डायरेक्टली ऐड कर लिया था. वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 6 भी शायद हमने कर रखा है क्लास में, बट अगर चाहे तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर
Yes, boss. Sir, Order. nothing, sir. Yes, yes. Nothing, sir. 6 हमने क्लास में किया हुआ है ना? We did 6 in class. Yes, sir. We did it, sir. Huh? Yes, sir. Yes. Answer is 120 degree. Yes. मुझे याद है हमने किया था शायद. Question number 7. 7 थोड़ा सा laws of motion related, पर इतनी basic आपको maths शायद आती, physics आती है. Two bodies each of mass m are kept at a separation of 2l. Two bodies m and m, they are kept at a separation of 2l. A particle of mass small m is projected from the midpoint of C. Particle of mass small m is present at distance, और ये √2l distance पे है from each of the body. Right? What it says is find the resultant force acting on m if the masses are attracting with a force of 10√2 Newton. ये अपनी तरफ 10√2 Newton के force से gravity मतलब it will be attracting. This is also attracting. So ये √2l और ये 2l है, तो एंगल कितना हुआ ये? What is this angle? A square plus B square is equal to C square. So ये बन गया कुछ Pythagoras theorem से. It satisfies the Pythagoras theorem. That means it will be 90 degree perpendicular to each other. दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ a square plus b square only. So we'll substitute it as f square plus f square, and that will become f √2 or √2 times f. Right? √2 times f. F की वैल्यू डाल दो. F की वैल्यू है 10√2 न्यूटन. So 10√2 into √2 become 20. 20 न्यूटन और डायरेक्शन रिजल्टेंट किधर होगा? If this is C, then it will be towards C. 20 Newton towards C. Sir, answer 20 Newton है ना sir? बेटा कुछ नहीं sir. 20 न्यूटन है C की तरफ. Yes. Yes, sir. 20 Newton, sir. Very nice. Question number 8. I hope समझ में आ रहा है. अगर नहीं आ रहा हो तो please पूछ लेना. Question number 8. Given the given figure, O is the center of regular polygon. 5 forces, each of magnitude F0 are acted upon the. So since they are same magnitude and they are representing the they can be used to represent a polygon. So cyclic polygon and that resultant will be 0. किसी भी रेगुलर ज्योमेट्री में जैसे अगर हम सेंट्रॉइड पे रखते हैं equal forces acting toward the each vertices of a triangle, resultant will be 0. Each forces toward the corner of a square, resultant will be 0. So by symmetry, a non-zero scalar quantity changes if it is rotated through an angle, if its direction changes. Yes.
can you show the question above? Avada? Can you show Non-zero the quantity question above, sir? when it is multiplied by another scalar. Eighth question, sir. हाँ बेटा. Sir, can you show the eighth question, sir? Eighth question, yes, absolutely. By symmetry, when the equal magnitude vectors are towards the corner of any regular geometry, by symmetry they will cancel out each other. जैसे इन दोनों का resultant two equal forces at an angle of 120 degree, उसका resultant भी इतने के ही equal होता है and it will be along the angle bisector. So these two will also get cancelled and the resultant will become 0. Thank you, sir. Done, sir. Done? Okay. Question number 9. Non-zero scalar quantity changes if it is multiplied with another scalar quantity. If two forces of equal magnitude acting on a particle, the angle between the forces is 60 degree, the resultant force. अगर same magnitude के force लगते हैं तो resultant is always along the angle bisector. So if it is at an angle of 60 degree, the resultant will be at an angle of 30 degree.